Continue our lecture. Yesterday, our lecture got interrupted due to the power cut, and it got too late by the time when the power supply has came. We will continue from the point where we have left our topic. Okay, but before that, I would like to get you revised about the things that we have studied yesterday, so that you can cope up with those things clearly. Okay. तो कल हमारा जो लेक्चर था वो इंटरप्ट हो गया था पावर कट के कारण, तो आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे कि आखिर हमारा क्या चीजें हमने कल कवर अप किया था। So first of all, yesterday we have read about the toxic and non-toxic gases. Okay, we have differentiated about the toxic and non-toxic gases. Toxic gases are those substances which basically are absorbed by our skin and get harmed to our skin and damage the upper portion of our body. Basically जो हमारा आउटसाइडर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, तो हमारा जो बाहर का पोर्शन होता है बॉडी का या जो भी स्किन वाला पोर्शन होता है उसमें अगर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो उस केस में वो टॉक्सिक गैसेस कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस टॉक्सिक गैसेस में बेसिकली हम डालते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को, ठीक है। अब इनके अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूं तो इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेस, हेल्थ इफेक्ट्स अपन को देखने को मिलते हैं। वी कैन सी द एक्यूट एंड क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट्स which are ranging from the irritation and damaging the cells of our body or cells of our skin. They cause basically irritation on our skin or eyes or any other parts of the body. Okay, in the throat, like in the throat they cause some type of irritation, like noxious gases. Whenever any person inhales noxious gases, he feels irritation in his irritation in his throat. At that time he used to cough regularly on regular basis, and within a week when the effect of noxious gases increases, then in that case he dies immediately. बेसिकली आपका ये जो टॉक्सिक गैसेस की बात बोल रहा हूं तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे स्किन में इरिटेशन होना, ठीक है, आपके स्किन में इरिटेशन होना, आईज में इरिटेशन होना, इसके साथ ही आपका कफिंग होना, ठीक है, लगातार जैसे नॉक्सियस गैसेस को इनहेल करने के बाद क्या होता है कि आपके गले में लगातार एक खराश बनी रहती है, जिसके कारण आपको रेगुलर बेसिस पे खांसी आती रहती है, और विद इन अ वीक जब उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में आपका क्या दिक्कत आती है कि आपको एक बार खांसी आएगी और वहां पर आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपने स्टार्टिंग में ही इलाज नहीं करवाया है तो इसका इफेक्ट बहुत बुरा होता है। Okay, now if we talk about the examples of the toxic gases, the examples are carbon monoxide, hydrogen sulfide, and chlorine, ammonia, sulfur dioxide. These are the examples of the common examples of the toxic gases. Now if we talk about the poisonous gases, these are the substances which when they are inhaled by our body, okay, when we inhale these gases in the sufficient quantities, they basically affect they have physiological effects. Basically internal effects are shown by the poisonous gases, like choking of the breath, okay, hindrance of the flow of the blood in our body. Basically they used to interrupt the supply of oxygen in our body. Okay, like this type of functions are done by the poisonous gases. They used to make you ill or death. Okay, तो poisonous gases के कारण बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी डिसीजेस आती हैं, जैसे कि जो पॉइजनस गैसेस हैं उनके कारण आपकी बॉडी, अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में पॉइजनस गैसेस को इनहेल कर लिया है तो उस केस में आपका बहुत सारे इंटरनल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको साइकोलॉजिकल फंक्शन जो है आपकी बॉडी का वो सारा का सारा इफेक्ट होता है। जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है बॉडी, वो फंक्शन इफेक्ट होता है। आई बात समझ में? देखिए, टॉक्सिक गैसेस आपके कुछ ऐसे इफेक्ट्स शो करेगा जैसे खांसी आना, स्किन में इरिटेशन होना, आईज में इरिटेशन होना, ठीक है। इस टाइप के जो फंक्शंस आपको इफेक्ट्स होते हैं वो किस में दिखते हैं? टॉक्सिक गैसेस में। लेकिन अगर मैं बात करूं वही पॉइजनस गैसेस की,
तो आपकी बॉडी के फंक्शन को जो इफेक्ट करता है वो होता है पॉइजनस गैसेस। बॉडी के फंक्शन को इफेक्ट कर दे रहा है, सांस न लेने देना, ये है किसका काम, पॉइजनस गैस का। उसके बाद आपका ब्लड का फ्लो ना होने देना, ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देना आपकी बॉडी में, वो है आपका पॉइजनस गैस, ठीक है। तो ये सब कब होता है, जब आप किसी भी गैस को, जितनी भी गैसेस हैं जो टॉक्सिक गैसेस है जिनका इफेक्ट आपको स्किन पे भी मिलता है, तो उनको हम टॉक्सिक गैसेस भी बोलते हैं। दूसरा, अगर वो हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन को डैमेज करते हैं या उसे फंक्शन को होने से रोकते हैं, तो उस केस में उसे हम पॉइजनस गैस भी कहते हैं। लेकिन ये पॉइजनस गैस की कंडीशन कब आती है, किसी भी गैस के कारण, किसी भी टॉक्सिक गैस के कारण कब आती है, जब हम उसे सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, बॉडी के अंदर अपन एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेसिकली। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। बेसिकली पॉइजनस गैसेस का इफेक्ट जो होता है बेसिकली आपका बायोकेमिकल प्रोसेस को इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि एंजाइम एक्टिविटी बोले तो now it basically affects the biochemical processes like enzyme activity. Enzyme activity basically means that most of the functions of the body of our body are performed by different enzymes, like digestion of the food. These are performed by different enzymes, different chemicals, okay. And functioning of the intestine, functioning of the kidney, all these things are performed by different enzymes, okay. So these enzymes activity gets affected due to the poisonous gases and the transportation of oxygen, interfering the transportation of oxygen, okay, which may result in systemic toxicity, okay. Now if we talk about the examples, hydrogen cyanide gas, hydrogen cyanide, SCN, okay, and basically nerve gases are the examples of poisonous gases, okay. Now next, we were talking about the carbon monoxide. Carbon monoxide basically it is a colorless, odorless, tasteless, non-irritating gas, okay. It has a specific gravity of 0.967. Its specific gravity is 0.967. It is combustible, but it does not support the combustion. In air, it burns at about 700 degrees Celsius to produce carbon dioxide. Well, what is the reason? What is the reason behind for production of CO? What is the reason for the production of CO? The reason for the production of CO is burning of any substance burning or oxidizing. Just write this thing: burning or oxidizing of any substance in insufficient oxygen, okay. Whenever anything gets burned or gets oxidized, then in that case, if the supply of oxygen is insufficient, then in that case carbon monoxide is produced. जब भी कोई चीज insufficient ऑक्सीजन में जलता है या फिर ऑक्सीडाइज होता है, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन होता है. Basically, carbon monoxide also forms an explosive mixture. What is the approximately? It ranges within 12%. Okay. Critical temperature and critical pressure are given over here. You can read it on yourself. Okay. Now, production of CO. Now, if we talk about the production of the CO, then it is first reason is the oxidation only. Whenever any carbonaceous material or coal gets oxidized in insufficient oxygen, then in that case carbon monoxide gas is generated, okay.
but in that case the percentage of carbon monoxide is so small that we just used to neglect it. We don't prefer it a serious matter. Okay, now if, the second reason is the explosives and blasting. If your explosive is not oxygen balanced, then in that case also you will see carbon monoxide gas is generated while after blasting. Okay, carbon monoxide is production is less if the explosive is blasted in strong roof. Just remember this line, it is a very strong, important line. If the explosive is blasted in a strong roof, then in that case the production of carbon monoxide will be very less. Okay, the third reason is the spontaneous combustion. Whenever the coal gets whenever coal is exposed in such conditions which are suitable for the spontaneous combustion, then in that case carbon monoxide gas is generated. Basically जब भी ऐसा होता है कि आपका कोल पहली बार एक्सपोज होता है, ऐसी कंडीशंस में एक्सपोज होता है जहां पर आपका कोयला ऑक्सीडाइज होगा, बट उसको उतनी सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसके इसमें वो क्या करता है, एक तो देखिए अब आपका पहला सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि सर मैंने जब माइंस खोली, मैंने जब खदान खोली, तो उस समय जो पहला पिलर मैं बना रहा हूं, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, ऐसे करते करते मैं बिलो ग्राउंड जा रहा हूं, ठीक है, तो ये जो पहला पिलर बनाया, दूसरा या तीसरा जो पिलर बनाया है, ये तो सबसे पहले एक्सपोज हो रहे हैं। ओके, ये तो सबसे पहले एक्सपोज हो रहे हैं और इनमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रही है, तो जाहिर सी बात है जब इनको ऑक्सीजन मिल रही है तो इनका भी ऑक्सीडेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो आप, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, क्या बोलता है कि whenever coal is exposed to such a condition which are suitable for the spontaneous heating. So which are the two conditions which are suitable for the spontaneous heating? First condition, I want to say that some of the students have doubt about that whenever a coal mine development is started. Okay, the first pillar that we have made in our mine, basically it gets exposed into the atmosphere and it gets a sufficient quantity of oxygen. Then why that coal pillar does not gets oxygen, why that why the coal that is present in that pillar gets oxidized and causes spontaneous heating? The reason behind that are the two reasons. First of all, first reason is it requires, whenever a coal gets exposed, whenever coal gets exposed then conditions required for spontaneous heating first condition oxygen, second condition heat. ओके, ये दो कंडीशन चाहिए उसको। हीट सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन तो पहले वाले को कोल पिलर को भी मिलता है, बट क्या उसको हीट मिलती है? नहीं, हम लगातार एयर का फ्लो करा रहे होते हैं। द कोल पिलर विच इज डेवलप्ड फॉर द एट द एंट्रेंस ऑफ द माइन, it continuously gets oxygen, but the second condition is not satisfied over there, that is heat. We have the highest velocity of air, and even we talk in depth also, the coal does not get oxidized. The reason is that we used to keep them cool.
That's why they does not, if even if they oxidize also, they does not reach to the stage of spontaneous heating. This is the reason. But whenever, just imagine if a coal is present in the gulf, from the coal gets collected on the floor in the gulf area, the coal gets collected on the floor after falling from the roof, the first roof fall. Okay, after the roof fall, some of the rock will also cover it from all sides. Okay, and after that, in the gulf area, you will also not supply the air. Okay, therefore it the coal which is buried under the rock, and it does not get the sufficient supply of air, then slowly and slowly, the oxidation process has already started, but slowly and slowly its temperature will gets increased, it does not cool down. And when the temperature gets increased, then in that case it will cause spontaneous heating. That is spontaneous heating, spontaneous combustion. Remember this thing, spontaneous heating. After the oxidation of the coal, spontaneous heating is caused. Okay, it reaches to the stage of spontaneous heating after the oxidation of coal. Okay, but what we have to do is, we used to stop this coal from getting reached to the spontaneous to the stage of spontaneous heating. Okay, but it gets oxidized, but we does not allow it to reach the to the stage of spontaneous heating. Remember this thing, these are the basic differences between spontaneous heating and the coal pillars which are exposed at the development of the mine at the initial stages. Okay, clear? Raise your hands if it is clear. You just have to raise your hands and make me sure that you understood this concept of spontaneous heating clearly. Okay, very good, everyone. Thank you. Now, next topic, underground machinery. Sorry, next topic. The next reason, underground machinery. It is a very simple thing that most of the machines used to produce CO. If you will use the faulty machines, or the machine if proper, or if you haven't done the proper lubrication of the machines, then in that case, carbon monoxide gas will be generated in a large quantity. Okay, तो ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है कि अगर खराब मशीन है या आपने प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं किया है तो उस केस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होती है मशीनरी से. ठीक है, मीथेन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन, मीथेन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होता है, या फिर माइंस में कहीं पर भी एक्टिव फायर है तो उस केस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होगा. एक्टिव फायर के केस में क्यों जनरेट होगा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड? डज एनीवन नो अबाउट दिस? What is the reason why active fire causes carbon monoxide? Active fire should cause the carbon dioxide gas, because as I have said, you will get the active fire in the Gulf area. The active fire will be created in the Gulf area, and when the coal starts burning in the Gulf area, then in that case the quantity of oxygen is not sufficient to produce carbon dioxide. That's why it will produce carbon monoxide in large quantities, and with this carbon monoxide only, we will be able to know that it is active fire, or the fire is at its initial stage, or the fire is at its final stage. Okay, clear? I should cut my hairs now, looking less smarter. Okay, we have already talked about the psychological effects, so today we will not discuss about this. As you already know, carbon monoxide mixes with the hemoglobin of our body 300 times more faster than the oxygen, and most of the times it just replaces the carbon monoxide just replaces the oxygen from the hemoglobin, and makes and
evolves the formation of, it reacts with the hemoglobin and to form carbon carboxy hemoglobin, which is a stable bright pink which is a stable bright pink compound, and it basically interferes the flow of oxygen in your body. बेसिकली आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये आपका ऑक्सीजन के मुकाबले 300 गुना ज्यादा तेजी से ब्लड में मिक्स होता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण आपके ब्लड का फ्लो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका the rate at which CO combines with the hemoglobin depends on the okay. So mixing of the hemoglobin carbon monoxide combining of the carbon monoxide with the hemoglobin depends on three things. First thing, number one, exposure time. Exposure time, the time period for which you were exposed in the atmosphere where the percentage of carbon monoxide is sufficient to harm you. Okay, and the concentration of carbon monoxide, if you are exposed to such an atmosphere where the concentration of carbon monoxide is very high, but you were exposed for few minutes only, then also it will affect the body, and the combining and the carbon monoxide will combine much faster than the normal conditions. Okay, the activity being performed, if you are working very hard, then in that case you will inhale more and more air inside your body, then in that case also the rate of carbon monoxide mixing with the hemoglobin increases. Okay, these are the three reasons in which the rate of the combining capacity of the carbon monoxide with the hemoglobin depends. You have to remember these 3 points. Okay, important. Next one, now hydrogen sulfide. If we talk about the hydrogen sulfide, it was also known as stink damp in early mining days. It is as poisonous as carbon monoxide only, and if it is inhaled in large quantities, then it may cause death to you in a very short period of time. Okay, Harichandan, I will use yellow color. Okay, is this fine to you? Okay. Okay, it is as poisonous as carbon monoxide, and if you have inhaled the hydrogen sulfide gas in the large quantities, then it may cause death also. Too much harmful for if you have inhaled it for a short time period, then also it will cause death. Okay, so it is a very harmful gas. Okay, it is colorless gas, it smells like a rotten egg, and slightly heavier than air. It has a specific gravity of 1.175 and density of 1.5 kg per Newton meter cube. Okay, you don't have to remember the density, you have to just remember the specific gravity of all the gases which are present inside the mines, and it is readily soluble in water. Just you don't have to remember this portion, the solubility of different gases. You have to just remember whether the gas is soluble in water or not. Okay, just remember this thing. Now if we talk about the solubility, so write in one page only. Okay, in one page you have to write in one page only. Now first of all, if we talk about the carbon monoxide, CO. Solubility of fine gases in water. Okay, first of all, carbon monoxide. Carbon monoxide. Carbon monoxide is hardly soluble.
Hardly, hardly soluble. Just write this. Write it down. Hardly soluble. Carbon monoxide is hardly soluble in water. Hydrogen sulfide, readily soluble. Acha. So what is the basic difference between hardly soluble and readily soluble? Okay, we will read about this also. We will clear the concepts about that also. Now the third gas is noxious gases. Noxious gases. Write about the NO2. NO2. Fairly. It is a very important thing which I am making you to write. Okay. बहुत ही important है. Fairly soluble. And it forms nitric acid. Forms nitric acid. Okay. Nitrogen dioxide is fairly soluble in water, and whenever it gets into the water, then it gives rise to the formation of nitric acid. Basically, most of the time it reacts with moisture, okay, causing irritation. If whenever the nitrogen dioxide passes from the nose, passes from the nose, from our throat, then in that case it reacts with the oxygen and gives rise to the formation of a nitric acid, and due to that nitric acid only you feel irritation in your nose and throat. Okay, so I can make question from this from here also, that what is the reason, due to which reason nitrogen dioxide causes irritation in your throat. Okay, so the answer is due to the formation of nitric acid when the nitrogen dioxide reacts with the moisture that is present in our nose. Okay, now sulfur dioxide, SO2. It is given over here or not? Not given. Hydrogen, methane. It is hardly soluble. You just have to write these things, because after the class I will not be able to provide this. Okay, this list will not be able, I will not be able to provide, because it doesn't get saved over here. That's it. That's why I will not be able to provide you this thing. Now, if we talk about the hydrogen sulfide, we have already talked. It burns with pale blue flame, and it forms an explosive mixture from 4.3% to 45%. Next, now, what are the sources of hydrogen sulfide in mines? There are many sources of hydrogen sulfide in the mines, because it is it gets generated due to the spontaneous heating of the coal. If the coal contains if any of the coal contains sulfur in the form of pyrites, then in that case, if that coal gets spontaneous combustion, gets the condition of spontaneous combustion, then हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज जनरेटेड. अगर कोई आपका कोयला इस प्रकार का है कि उसमें सल्फर पाया जा रहा है, तो वो पायराइड्स के फॉर्म में पायराइड्स का फॉर्मेशन करता है अगर वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग करने लगता है कोल. दूसरा, सेकंड रीजन इज decay of the organic matter, especially the timber, action of the acid mine water on sulfides, iron pyrites, methane blowers and outbursts give small quantities of hydrogen sulfide, emission from fisheries and joints of strata, especially in potash mines, emission from water of mineral springs when intersected, emission in association with fire damp,
improper detonation of gunpowder, blasting in heavy sulfide ores, and bacterial action on sulfates and dust explosion in sulfide mines. तो बेसिकली ये कुछ रीजंस है जिनके कारण आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जनरेशन होता है। चाहे आप ऐसा कोल हो जिसमें सल्फर की मात्रा होती है तो पायराइड्स का फॉर्मेशन होता है अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लगता है तो। दूसरा होता है कि आपका कोई भी टिम्बर वगैरह का क्या होता है, सड़ने के कारण, ऑर्गेनिक मैटर के सड़ने के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जनरेशन होता है। एंड द थर्ड रीजन इज आपका एसिड माइन वाटर सल्फाइड्स के साथ अगर रिएक्ट करता है या फिर आयरन पायराइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके कारण भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जनरेशन होता है, जो मीथेन ब्लोवर्स होते हैं या आउटबर्स्ट होता है कभी कभार। व्हाट डू यू मीन बाय मीथेन ब्लोवर्स? द whenever the pocket is present inside the strata and that pocket contains methane gas, then in that case if some kind of crack is generated and that crack reaches to the that pocket, then you will hear a hissing sound that is caused due to blowers, because the methane gas will leak from that pocket to your face. Okay, remember this thing, that is called blower. And whenever the separation between the face and the pocket is very little separation, then in that case the methane gas which is trapped inside the strata with high pressure, it will just crack the coal, it will burst the coal, that thin separation, and come out, and in that case hydrogen sulfide gas is produced and it is also known as outburst. Okay, now emission from the fissures and the joint strata, as I have told you. Okay, in potash mines basically water of mineral springs, okay, when intersected, फायर डैम के साथ भी ये निकलता है। उसके बाद साथ ही अगर गन पाउडर आप जलाते हैं, इफ यू डिटोनेट अ गन पाउडर, तो उस केस में भी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जनरेशन देखने को मिलता है। जब भी आप सल्फाइड ओर्स में ब्लास्टिंग करते हैं तो उस केस में भी आपको क्या दिखता है, देखने को मिलता है, आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जनरेट होता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है आपका प्लेसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन माइंस। अब माइंस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहाँ जनरेट होता है? It is found basically stagnant, where stagnant water is found present in the old workings, since it is highly soluble in water. Okay, intermediate and main sump, wherever the water is present, stagnant water is present in the mines, then you will find the hydrogen sulfide gas over there. And in the areas of gulf fires, spontaneous heating areas, and in the old workings, due to poor ventilation also, the hydrogen sulfide gas is found. Okay, next, what are the psychological effects? Basically it is extremely toxic, it is an extremely toxic gas and as well as highly poisonous gas, because it is much more poisonous than carbon monoxide, because it gives an immediate warning about that, because it is how it will give warning to you that you are getting affected by the hydrogen sulfide gas. It will cause irritation and inflammation in the eyes, and the respiratory tracts will also get irritated due to due to the hydrogen sulfide gas. If the percentage of hydrogen sulfide gas is 50 to 100 ppm, after 1 hour of exposure you will feel these things. Okay, you will feel pain in chest also if the concentration is 200 to 700 ppm. Now if we talk about the psychological effects, the first one is at 0.05, from 0.05% to 0.01%, there will be a symptoms on eye and respiratory tract, that is irritation in eye and respiratory tract. At 0.01%, you will not be able to smell anything after 15 minutes of exposure. At 0.02 to 0.07%, the eye irritation will get increased, headache will occur, dizziness, nausea, dryness, and pain in the nose, throat, and chest will occur. At 0.07 to 0.1%, you will feel unconsciousness, okay, and respiration will be ceased. Okay, you will not be able to breathe, and you may die also. Okay, at 0.1%, you will die in few minutes only. तो आपका यहाँ पर बोलता है कि इन परसेंटेजेस में, तो सबसे पहले वाले में बोलता है कि आपके आंखों में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, इरिटेशन होने लगेगा। मैंने भी
सूंघ लिया क्या यार, लगता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो आपके आंखों में और गले में इरिटेशन होने लगता है। दूसरा, आपको 15 मिनट, अगर इतने परसेंट है ना, तो 15 मिनट बाद आपका सूंघने की शक्ति खत्म हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू स्मेल एनीथिंग। उसके बाद आंखों में, और इतने परसेंटेज पे तो भाई साहब आंखों में इरिटेशन और भी बढ़ जाएगा, हेडेक होगा, डिजीनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नोज थ्रोट एंड चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बेहोशी छाएगी और कुछ मिनटों में डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रस फ्यूम्स, NO2। basically it is an inert gas, it does not generally, it does not sorry, I cannot increase the video quality. The reason for not increasing the video quality is that if I will increase the video quality, then at your end your data will be consumed more and video will buffer more. That's why, this is the reason, that's why we are not able to provide the video in high quality. Otherwise, if it is on demand, then we can, but not every student can afford that thing, na. Some of the students have only 1.5 GB data. Then in that 1.5 GB data, if I will consume the 3 GB data, then how will you download the movie also? Okay, so I have to take care of every student. That is the reason. I know the quality of video is very less, approximately maximum 720 pixel. Okay. Okay, नाइट्रोजन गैस इज 5G अनलिमिटेड सबके पास नहीं है ना यार। किसी के पास 4G मोबाइल हुआ, आपके पास 5G है, मेरे पास 5G है, मैं 50 Mbps की स्पीड से चलाता हूँ, किसी के पास 4G हुआ, कुछ भी हुआ, तो एक थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। दैट्स वाई सबका ध्यान होना चाहिए। हाँ, आप सबके सब कितने 12 लोग आते हो ज्यादा से ज्यादा, 12 के 12 बोल दो, ठीक है सर, हमें चलेगा। लेकिन यार नहीं यार, अभी बहुत सारे कोर्सेस से आगे भी दिक्कत होगी। चलो देखते हैं, मैं बोल देता हूँ हाई क्वालिटी करने के लिए। मेरे पास BSNL है। सही बात है भाई, मैं भी BSNL की सिम रखा हूँ, मेन नंबर BSNL ही है। चलो, लेट्स कम टू द टॉपिक। So, as I have said, nitrogen is an inert gas. It does not react with anything. But whenever it forms oxides, it forms several oxides, and most of the oxides are extremely toxic. There are 6 oxides which are formed by the nitrogen gas. First, NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, and N2O5. Just remember this oxides. Okay. Now, N2O5. It is an unstable white crystalline solid. Okay. So it is. We don't know. We does not have to worry about this. Now the next one is NO, which is a nitric oxide. NO2, nitrogen dioxide. N2O4, nitrogen tetraoxide. They have a biting and choking smell. You will not be able to smell nicely if you have inhaled these oxides. Okay, they are yellow to reduce. What is the color of the nitrogen oxides? Yellow to reddish brown in color, and they have a smell of blasting powder fumes. Okay, they are easily dissolved by the moisture in mine air, and nitrogen dioxide is the most toxic of these oxides of nitrogen. Okay, just remember, nitrogen dioxide is the most toxic gas that is present among these of the 6 oxides. Okay, तो बेसिकली इसका जो नाइट्रोजन होता है, ये एक प्रकार की इनर्ट गैस होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके, ये मतलब इनर्ट गैस मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ये क्या करता है कि बहुत सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से 6 ऑक्साइड्स के नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। NO2, N2O, N2O3, N2O4 एंड N2O5। अब आपका N2O5 से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चूंकि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्मेशन में होता है। बाकी के जो बच्चे, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हो गए, ये इस प्रकार के होते हैं कि आपके यहाँ पे ऐसा लगेगा कोई काट रहा है गले के अंदर, ठीक है। और आपको स्मेल करने में, मतलब कोई भी चीज सूंघने में ना
ऐसा लगेगा सूंघ नहीं पा रहे हो, कोशिश करोगे बट सूंघ नहीं पाओगे। और अगर इसके कलर की बात करें तो जहां पर भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर येलोइश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, येलो टू रेडिश ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। और वहां पर बारूद की खुशबू आती है, ब्लास्टिंग के पाउडर की खुशबू आती है, ठीक है, जो पटाखे फोड़ने के बाद जो बेहतरीन से खुशबू आती है ना, मजा आ जाता है, वैसी खुशबू कुछ आती है। और ये पानी में इजीली डिजोल्व हो जाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे टॉक्सिक गैस है इन सभी में। ओके, नाउ NO combines quickly with O2 to form red fumes of nitrogen dioxide. Okay, this has got pungent smell like fuming nitric acid. ठीक है, अब देखिए ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये आपस में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके और भी बहुत सारी चीजें बनाते रहते हैं। जैसे NO किससे कंबाइन हुआ, O2 के साथ कंबाइन हुआ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, जो कि नाइट्रिक एसिड की तरह जिसकी स्मेल होती है। ठीक है, अब NO2 जैसे ही ठंडा होता है, ये पूरी एक प्रोसेस है कि सबसे पहले नाइट्रोजन oxygen, first of all the nitrogen will react with the oxygen and gives rise to the formation of nitrogen dioxide. Then after the nitrogen dioxide gets cooled down, it is slowly converted to into a colorless nitrogen tetraoxide. Okay, so this is the process from nitrogen oxide to nitrogen dioxide to nitrogen tetraoxide. NO2 is the most poisonous among nitrous fumes. Okay, now this is important sources of nitrous fumes. If we talk about the sources of nitrous fumes, they are formed by high explosive due to blasting of the high explosives like dynamite, gelatin dynamite. Okay, due to incomplete detonation. Their formation is due to explosives, although also such type of explosive which contain nitroglycerin, they used to produce nitrous fumes. Okay, nitroglycerin explosives with oxygen imbalance. If nitroglycerin explosive has an imbalanced oxygen, and then in that case large quantity of nitrous fumes are generated. And if there is deficiency of oxygen, then in that case carbon monoxide is generated. Okay, this thing is very dangerous. Dangerous condition. What is the dangerous condition over here? The dangerous condition is that, a very important line, most of the times you will see that the nitrous fumes, they get settled down on the freshly blasted and dry muck. Okay, muck pile, they get settled down on the freshly blasted and dry muck pile. They just, nitrous fumes just get settled down, it will sit silently over there. Okay, because it is 1.5 times heavier than air. Okay, but when the operator, loader operator comes close to it and just he used to disturb the muck pile for loading purpose, then in that case it suddenly it comes out over there and gets scattered over the atmosphere, and the loader operator will inhale that thing, and finally he gets exposed to the conditions where nitrous fumes are present. Okay, अब ये चीज डेंजर क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, क्या होता है कि नाइट्रस फ्यूम्स 1.5 गुना हेवियर होते हैं एयर से। अब इसके कारण क्या होता है, वो जाके वहां पर ब्लास्टेड मटेरियल के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, और जैसे ही ब्लास्टेड मटेरियल के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा ऐसे ही चुपचाप पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। और जैसे ही लोडर पहुंचा, उसको डिस्टर्ब किया, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, डिस्टर्ब किया, वो बम से पूरे एटमॉस्फेयर में एक्सकैटर हो जाएगा, फैल जाएगा। और जब उसको सूंघता है आपका लोडर ऑपरेटर तो वो उससे अफेक्टेड हो जाता है। ओके, डीजल इंजन में के कंबशन के समय भी नाइट्रस फ्यूम्स का जनरेशन होता है। डीजल लोको जो है तो स्मॉल क्वांटिटीज में ही सही, लेकिन नाइट्रस फ्यूम्स का जनरेशन करते हैं। ठीक है, अब अगर शाफ्ट्स में या टनल्स में आप ब्लास्टिंग करते हैं तो चूंकि स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण नाइट्रस फ्यूम्स का जनरेशन आपको वहां पर भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजन से छोटे मोटे, बाकी आपके लिए तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि आपका
एक्सप्लोसिव वाला याद रख लीजिएगा, वीक डिटोनेटर्स यूज करेंगे अगर, कम सही तरीके से डिटोनेशन नहीं करेंगे उस केस में नाइट्रोग्लिसरीन के कारण आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि डेंजर क्या होता है इसके कारण। Now, if we talk about the psychological effects, it is 7 to 10 times more toxic than CO. 7 to 10 times more toxic than CO, nitrous fumes, and nitrogen dioxide is 5 times more toxic than nitric oxide. Okay, basically NO2 combines with the hemoglobin of the blood also. It combines with the hemoglobin of the blood about 3 lakh times more frequently than O2. Oh my god. And it forms an extremely stable compound over there which will reduce the oxygen carrying capacity of the blood. Okay, आपका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्या है कि नाइट्रस फ्यूम्स आपके ब्लड में 3 लाख गुना ज्यादा तेजी से मिक्स होते हैं ऑक्सीजन के मुकाबले, और जैसे ही ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो ये ऑक्सीजन को आने नहीं देंगे, बोले भाई यहाँ से हट। तो जब वो भाग जाता है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कैप्चर करने की क्षमता घट जाती है और वहीं पर खेला हो जाता है। बहुत दिक्कत है बाबू। सो द TLV for NO2 is 5 ppm. Okay, remember this line. Nitrogen dioxide causes a corrosive effect on the lung tissues. From here a question can be made, which of the following gases causes corrosive effect on the lung tissues? Therefore nitrogen gases is the gas that causes corrosive effect on the lung tissues. तो आपको ये लाइन याद रखना है कि आपके लंग के जो टिश्यूज होते हैं उनको सड़ाने का काम कौन सी गैस के द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस डाइऑक्साइड गैस के द्वारा किया जाता है। ओके, इट इज सॉल्युबल इन वाटर and cause irritation in the throat, nose and lungs. Okay, immediately whenever a person is affected by the nitrous fumes, he shows immediate symptoms like coughing, nausea, choking, perspiration and headache, but later develops serious bronchial troubles such as bronchitis which may prove fatal within 48 hours. अब जो भी व्यक्ति नाइट्रस फ्यूम्स को इनहेल करता है उसके अंदर जो तुरंत ही इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ये वाले, ठीक है। और अगर वो अपना इलाज नहीं कराता है तो विद इन 48 आवर्स इसके सीरियस इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। हल्के फुल्के सिम्टम्स तो स्टार्टिंग में ही दिख जाते हैं। दीज आर द इफेक्ट्स, यू कैन जस्ट रीड इट डाउन। ओके, SO2 sulfur dioxide, it is a colorless gas, it has strong sulfurous smell. Okay, neither combustible, not a supporter of combustion. It is 2.21 times heavier than air. It is a very poisonous gas and extremely irritating to the eyes and respiratory passages. Basically it is produced in small quantities only in the while blasting in the mines and after a fire or coal dust explosion. Okay, now if we talk about the hydrogen, basically hydrogen is the lightest gas ever known and it is odorless, colorless, tasteless, slightly soluble in water. Okay, it does not support combustion but it is itself combustible, and when it mixed with air it forms an explosive mixture if it is present from 4% to 75% by volume. Basically it does not occur in mines generally, but maybe sometimes it is found in the fire areas in mines, in the or it can result in the distillation of the coal. Basically it is generated due to the storage at the places where storage of the batteries have been done in the below ground mines or the battery charging stations. In that places in small quantities you will find hydrogen gas, but the gas is not poisonous but suffocates a person due to lack of oxygen. Methane gas, it is also known as fire damp. It is a tasteless, colorless, odorless and lighter than air. Okay, it is a combustible gas and a major gas which is found inside the coal mines. It burns with a pale blue flame and does not support combustion.
it is hardly soluble in water, because if you have to make it soluble in water, then you have to maintain the temperature of the water up to 20 degrees Celsius, then only it will get dissolved in water. If we talk about the limits of explosibility, its limits of explosibility is 4.8% to 5.4%. 5.4% to 14.8%. करेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है. Okay. So what are the reasons due to which methane is produced in the mines? Whenever a cellulose gets decomposed or gets decayed, in that case methane gas is generated. जब भी कोई cellulose आपका सड़ता है या मतलब वही है, सड़ता है, गलने लगता है, तो उस केस में मीथेन गैस जनरेट होती है. Now you will ask, you have the right to ask me, sir, that means if a timber is present in the water, okay, just suppose, just here clearly, if a condition, you have to understand the condition, if a timber prop is present in water, okay, it gets decayed, okay, it gets sufficient water, not just floating on the water, it is kept at some corner of the mine. Remember, sorry, here carefully, okay, condition. A timber prop is kept at one corner of the mine. It gets sufficient quantity of water, and due to that reason, it gets oxidized. Oxidation process occurs over it, and due to that reason, it gets decayed and decomposed. So, will it produce methane gas? एक टिम्बर प्रॉप है, उसको हमने माइंस के कॉर्नर में रख दिया है. उसको एक कंडीशन ये है कि भाई इसको पानी इतना मिल रहा है कि वो धीरे धीरे सड़ सकता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, तो क्या मीथेन गैस का जनरेशन होगा? विल देयर बी जनरेशन ऑफ द मीथेन गैस इन दिस कंडीशन? टिम्बर प्रॉप है. देखिए, ये सेल्यूलोज बोलने का मतलब क्या था? यहां पर डिकेइंग ऑफ सेल्यूलोज, H2S का जनरेशन होगा. बिल्कुल, इस कंडीशन में H2S का जनरेशन हो सकता है, ठीक है, बट मीथेन गैस का जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि सेल्यूलोज का मतलब क्या होता है? ग्रीन टिम्बर, ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज, ठीक है. जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या पत्तियां होती हैं, हमेशा उनके सड़ने पर, सेल्यूलोज मतलब उनके इनके ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं पेड़ पौधे के, उसके सड़ने पर, सुखाने के बाद नहीं, जब ग्रीन है, हरे भरे है, जिंदा है, तब अगर आप सड़ाओगे तो उस केस में मीथेन गैस का जनरेशन होगा. यही है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का सड़ना, यही है सेल्यूलोज का सड़ना, ग्रीन पोर्शन, ठीक है. ग्रीन पोर्शन का सड़ना ही क्या कहलाता है? आपका जनरेशन देता है, मीथेन गैस के जनरेशन का कारण है, ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस बिकॉज इट इज बेसिकली फाउंड इन द एरियाज वाटर, मार्शी एरियाज लाइक दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसको मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है. ओके, मीथेन इज फाउंड एट फ्रॉम द कोल और एडजेसेंट स्ट्राटा by the process of exudation and bleeding. It is found in the form of blower, gas outburst, and release by roof fall due to sudden roof fall of barometric pressure. Okay, तो ये आपका ब्लीडिंग के फॉर्म में कोल या फिर उसके एडजेसेंट स्ट्राटा से निकलता है तो पाया जाता है, ब्लोवर के फॉर्म में भी पाया जाता है, गैस आउटबर्स्ट के फॉर्म में, या फिर कहीं पर अगर बहुत ज्यादा रूफ फॉल एकाएक हो गया तो बैरोमेट्रिक प्रेशर के फॉल के कारण भी ये मीथेन गैस अपन को देखने को मिलती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ गैस एमिशन, जो गैस एमिशन, द एमिशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम द स्ट्राटा, इट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू नेचर ऑफ कोल. It depends on the nature of the coal, method of mining, speed of advance of longwall phase and ventilation arrangement.
जो कारण है जिनके कारण आपका मीथेन गैस का एमिशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सबसे पहला कैसा कोल है, माइनिंग का कौन सा मेथड है, लॉन्ग वॉल फेज में कितना तेजी से आप एडवांस कर रहे हैं, वेंटिलेशन का अरेंजमेंट आपने क्या क्या बनाया हुआ है। नेक्स्ट, ओके, monitoring devices. So tomorrow we will talk about the monitoring devices. That's all for today. Tomorrow we will complete, not tomorrow, in the evening, today only, we will complete all the monitoring devices in a very short and sweet manner. Okay, so that's all for today. Take care and thank you so much. Good night everyone. Okay, I will upload the notes, don't worry. Harichandan, basically I have to prepare the lecture, that's why I'm not talking about the problem. I have to prepare my lecture, okay? Then only I will be able to take the class. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.